मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Qc, how to find equilibrium concentrations. Now we are starting with new topic. This was there in thermodynamics also, that is relation between free energy change, Qc and Kc. This formula is important for 12th standard. That's why we are doing. Otherwise, it is in deleted portion. Formula is important. So just we'll derive the formula. We'll find some relation and we'll do one numerical based on it. Relation between equilibrium constant Kc, reaction quotient Qc, and free energy, Gibbs free energy change, that is delta G. So now it is the relation between equilibrium constant Kc, then reaction quotient Qc, and Gibbs free energy change. That is delta G. Just we have to find out what is the relation between these three: Qc, Kc, and delta G. Kc is equilibrium constant. So many sums we had done. Now you know what is Kc. Qc is reaction quotient. Formula of Qc and Kc are same, but Qc में जो concentration terms use करते हैं that are not equilibrium concentrations. In Kc formula we are using equilibrium concentrations. Delta G is free energy change. Free energy is the available energy from the system that can be converted into useful work. And this free energy is important for determining spontaneity of the reaction. This we had done in thermodynamics. If delta G value for a reaction is negative, the reaction is spontaneous. And if delta G is positive, reaction non-spontaneous. If delta G is 0, then equilibrium condition is there. So now what is relation between this delta G, Qc and Kc? Actually it is derived from thermodynamics, but that is not in our syllabus. It is in higher standard to give relation between these three. Just we will write it. Relation between delta G, Qc and Kc. That is delta G equals delta G naught plus RT ln Qc. What is difference between delta G and delta G naught? Delta G is change in free energy at any state of the reaction. But delta G naught is the free energy change, that is a standard free energy change of the reaction. Standard means under standard conditions. At 298 Kelvin temperature, that is 25 degrees Celsius temperature, 1 bar pressure, if you are calculating delta G, then that change in free energy is known as standard free energy change. So delta G और delta G naught में क्या फर्क है? Delta G naught is standard state में calculate करते हैं और delta G at under different conditions. At 298 Kelvin and 1 bar pressure, if you are calculating free energy change, then that is delta G naught. Now, we know that at equilibrium, first suppose if delta G is negative, then reaction will be spontaneous. Process will be spontaneous. Spontaneous means it will occur by its own. अगर delta G negative हुआ तो reaction अपने आप होता है, जैसे melting of ice. If we keep ice at room temperature, it will melt spontaneously. So melting of ice is spontaneous process. Suppose we keep water at room temperature, evaporation occur by its own. समंदर का पानी evaporate हो ही रहा है ना,
ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. And for all spontaneous reactions, delta G value is negative. Suppose for any reaction, delta G value is positive, then the reaction will be non-spontaneous. Reaction will be non-spontaneous. मतलब अपने आप से नहीं होगा. जैसे if I keep water at room temperature, spontaneously it will not be converted into ice. तो हमारे यहाँ घरों में मटके का पानी जो है वो बर्फ बन जाता. पॉसिबल नहीं, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होता ना हमारे यहाँ, इसलिए सियाचिन वगैरह में पॉसिबल है. बट इफ इन आवर होम वी कीप वाटर in winter season also, then only spontaneously it will not convert it into ice. Similarly, if we keep, if we fill gas in 2 bulbs, automatically it will not move in 1 bulb. Water will flow from top to bottom spontaneously. But if we want to take water to the top from bottom, then we need motor. अपने आप पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता है. हाँ, अपने आप पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है. तो जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं वो स्पॉन्टेनियस, और जिनको किसी इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस. तो अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा जी इज 0, then equilibrium condition is there. Then the reaction is in equilibrium. And we are studying equilibrium lesson. So delta G 0, put this value in equation 1. So 0 will be equal to delta G naught plus RT ln Kc. क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है तो QC और KC भी सेम होता है, ये भी हमने पढ़ा था. QC can be more than KC, QC can be less than KC, or QC will be equal to KC. So when this QC and KC values are same, जब equilibrium establish होता है, reaction quotient, equilibrium constant will be same if reaction is in equilibrium. So QC equal to KC. That's why in place of QC we had written KC, delta G 0, delta G naught plus RT KC. Take this, it will become negative. RT ln KC to the base E. ln का मतलब होता है, आपने log सुना हुआ है. ln और log में क्या फर्क है? ln is calculated to the base E and log is calculated to the base 10. And if you want to convert ln to the base E, suppose कोई वैल्यू है x, अपन को इसको log में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई, तो ये log to the base 10 हो जाएगा. This is the relation. Suppose any value is there of x, if you are calculating its log to the base E, if you want to calculate it to the base 10, because हमारा जो log table है वो base 10 पे based है, तो क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई. So this is the difference between ln E and log 10. Now this formula can also be written as in exponential form. Take this RT down, delta G naught upon RT minus RT, that is equal to ln Kc to the base E. आप मैथ्स में या छोटी क्लासेस में पढ़ते थे how to convert log to exponential form or exponential form to logarithm. So see, if you want to find Kc value from here, the Kc value will be e raised to power this, e raised to power minus delta G naught upon RT. This formula they may ask for MCQ. Is this correct relation between Kc and delta G naught? So this is the correct relation. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और जो ऊपर लिखा है उसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म. बोथ आर करेक्ट only. Both are correct relation between delta G and Kc, but the first one is called logarithmic form, second one is called exponential form. Okay? Now, from this logarithmic form, if you want to convert it into 2.303, that is log form, how to write? Delta G naught, that is equal to minus 2.303 RT
log Kc. Now it is to the base 10. And this formula we will use for calculating numericals, for solving numericals. Same formula is there in 12th standard also. Relation between equilibrium constant and standard free energy change. अभी जो standard लिखा हुआ है, delta G naught लिखा है, तो temperature कितना होगा? 298 Kelvin. If given or not given, in sums, we have to take temperature as 298 Kelvin. Q 298? Because it is in standard condition. So temperature must be 298. R is known as gas constant. So delta G naught and Kc, the relation between them is this one, and this we will use for numerical purpose. How to use it in numericals? One example is given, that will do. It's question number 7.10. 7.10. What is it? The value of delta G for phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. What is the value of Kc? 298 Kelvin temperature is given. Delta G naught 13.8 kilojoule per mole. 13.8 kilojoule per mole. It is positive 13.8 kilojoule per mole. अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर delta G is given in kilojoule, R value will be taken as 8.314 10 to the power minus 3 kilojoule per mole Kelvin. If delta G is given in kilojoule then, और अगर delta G naught joule में दिया है तो R का वैल्यू क्या लोगे? 8.314, not 10 to the power minus 3, only 8.314. Clear? Temperature दिया है 298. आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. Write down the relation. Delta G naught 2.303 RT log Kc. Kc का वैल्यू निकालना है. Kc को सब्जेक्ट बना लीजिए. Log Kc is delta G naught upon 2.303 RT. Put up all the values. It's 13.8 minus 2.303, 8.314, 298, temperature 298, 10 to the power minus 3. Just we had put all the values. Delta G naught is given as 13.8, so we had put minus sign is already there. What's the value of R? 8.314, 10 to the power minus 3, and temperature is given as 298. If you solve this, log Kc value आएगा आपका minus 5.569. Log Kc would be minus 5.569. अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर log Kc का वैल्यू नेगेटिव आता है, हमको Kc निकालना है, तो हाउ टू फाइंड आउट? एंटी लॉग यू हैव टू सी. minus 5.569 એન્ટી લોગ જોવો પડે. નેગેટિવ્સ નું એન્ટી લોગ ના મળે એટલે એને પહેલા તો પોઝિટિવ બનાવવાનું. minus 5.569 છે આ નંબરને, એનું જે આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ને એને પોઝિટિવ બનાવવાનું. કેવી રીતના બનાવવાનું? એન્ટી લોગ 5.569 છે તો +6 -6 કરવાનું. નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર યુ હેવ ટુ એડ એન્ડ સબટ્રેક્ટ. नेक्स्ट इंटीजर ऐड एंड सबट्रैक्ट करवाना. तो 5.5 जो नंबर है उसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है? 6. तो हमने +6 भी किया, -6 भी. अगर आप किसी नंबर में ऐड और सबट्रैक्ट करते हो, सेम नंबर, डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ दिस -6 कैन बी रिटन एज 6 बार, और अगर इस 6 में से आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल हैव 4
3 and 1. It is 6 bar 0.431. Minus 6 is written as 6 bar. अब आपको इसका एंटीलॉग कैसे देखते हैं? 43 का 1 पे देखना पड़ेगा. एंटीलॉग ऑफ 43 at 1. अगर आप 43 का 1 पे एंटीलॉग देखोगे तो आएगा 3.81. What's the answer? 3.81. जो भी आए देख लेना. Antilog of 43 at 1. Suppose it is 3.81 into 10 raised to power minus 6. This is the answer. This way you have to determine the Kc value, that is equilibrium constant. So this relation is important. Very simple sums will be there. Kc will be given. Delta G find out करो ऊपर से. Delta G given हो तो Kc जैसे आ क्वेश्चन में delta G is given. Just we calculated Kc by putting the values. You should be aware with logarithm. How to see log, how to see antilog. That is very important. Okay. Now next question. Next question is 7.11. This time equilibrium constant is given. We will calculate delta G. 7.11. The question is, hydrolysis of sucrose gives equilibrium constant for the reaction is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin. What is delta G naught? Hydrolysis of sucrose. Sucrose sugar जो आप खाते हो वो sucrose. उसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज एंड fructose, and its equilibrium constant for this reaction is given as 2 into 10 to the power 13. 2 multiplied 10 raised to the power 13. You have to determine delta G naught at the temperature of 300 Kelvin. Suppose you are taking R value as 8.314. Your delta G value will be in Joule. जैसा आप R का वैल्यू लेते हैं वैसा डेल्टा G मिलेगा. अगर R वैल्यू 8.314 है तो आपको जो डेल्टा G मिलेगा वो किस में मिलेगा? जूल में. Clear? Now put up the values in the formula. First we'll write the formula. Delta G naught minus 2.303 RT log Kc minus 2.303. What is R? 8.314. What is temperature? 300. Log Kc 2 into 10 to the power 13. It would be minus 2.303, 8.314 into 300. How to see log? 13 point. 10 to power जो है ना, यानी characteristic कहवाए. So characteristic is 10 to power 13. So 30. अब log किसका देखना है? 2 का. और अगर आप log टेबल में log 2 का वैल्यू देखोगे तो आएगा 0.301. बद्धा ने मल्टीप्लाई कर लियो. If you multiply it, then your answer will be minus 7.64 10 to power 4. Minus 7.64 10 to power 4 जूल पर मोल. और अगर आप इसको किलो जूल में चेंज करना चाहते हो तो 76.4 किलो जूल per mole. This is the answer. So in first sum, delta G was given. We calculated Kc, and in second sum, Kc was given. We calculated delta G. So this is the relation between free energy change and equilibrium constant. And what is free energy change? This is used to determine whether the reaction is spontaneous or not. If the reaction is spontaneous, delta G value will be negative. If the reaction is non-spontaneous, delta G value will be positive. And if delta G is 0, then the reaction is in equilibrium condition. Clear, students? Now,
With the help of Kc also you can tell whether reaction is spontaneous or not. કેવી રીતના પહેલા भी बताયું હતું thermodynamics માં. If Kc is more than 1, then spontaneous process. If Kc is less than 1, non-spontaneous process. And if Kc is equal to 1, equilibrium condition. With this formula only we are writing. આ ફોર્મ્યુલા થી જ કીધું આપણે કેવી રીતના આ નેગેટિવ હોય તો સ્પોન્ટેનિયસ હોય આ નેગેટિવ હોય ને નેગેटिव साइन ऑलरेडी देयर और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा जी और केसी इनवर्सली रिलेटेड है क्योंकि आगे माइनस का साइन है तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए तो केसी पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो केसी नेगेटिव होगा If delta G is 0 for equilibrium, then Kc would be equal to 1. So with the help of Kc also we can say, with the help of equilibrium constant value also we can tell whether reaction is spontaneous or not. अगर equilibrium constant 1 से ज्यादा आता है जैसे 2.2, 5.6, 9.8, 40 into 10 to the power 5, if it is more than 1, reaction is spontaneous. If it is less than 1, like 0.259, 0.569, एक करता ऊंचू आवे तो non-spontaneous. And if exactly 1, the value of Kc, then the reaction is in equilibrium. Okay, so we can determine spontaneity of the reaction with the help of equilibrium constant values also. Now the next topic is factors affecting equilibrium, and this topic is very very important. Everywhere you will find it. बोलते हैं ना जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर वो नहीं आता है तो आप मैथ्स नहीं कर सकते बेसिक्स है वैसे ये भी केमिस्ट्री का बेसिक है हर इनऑर्गेनिक के चैप्टर पे आपको ये मिलेगा जो अब अपन पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम देयर आर सम फैक्टर्स हमने पढ़ा था कि जैसे कोई रिएक्शन है और उसमें आपने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो वी हैव टू कीप सम ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट इफ यू कीप ऑन चेंजिंग दैट फैक्टर्स देन योर इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब जैसे एक सिंपल सी बात है कि यूनिट टेस्ट है अभी तो केमिस्ट्री का तो हो गया सपोज यू आर हैविंग यूनिट टेस्ट ऑफ मैथ्स ऑन 5th of January for example okay we are just taking an example. Suppose you are having unit test of maths or chemistry on 5th. आज मैं आपको बोल रही हूं कि there will be chapter number 1 and 2. 5 जनवरी को एग्जाम है चैप्टर 1st और 2nd आने वाला है accordingly you will plan કે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આટલા આટલા ટોપિક્સ છે મારી પાસે આટલા દિવસ છે આટલું આટલું એક દિવસમાં કરીશ એટલે મારું સિલેબસ પૂરું થઈ જશે Everybody makes plan for completing the goal. अब 5th को एग्जाम है आज मैंने आपको सिलेबस दिया 1st और 2nd चैप्टर आने वाला है आपने प्लान आउट कर लिया आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया नाउ ऑन 2nd of January मैं आपसे बोलती हूँ नाउ चैप्टर नंबर 3 will also come for 2nd तो છે જ 3rd ચેપ્ટર એ આવવા વાળો છે હવે તમારું તો પ્લાનિંગ વિખાઈ જશે ડિસ્ટર્બ થઈ જશો કે હવે એટલી ઝડપથી ત્રીજો ચેપ્ટર કેમ થાય એની હાઉ યુ વિલ મેનેજ स्टडी आवर्स बढ़ा दोगे कम टॉपिक कर रहे थे पर डे अब ज्यादा टॉपिक करोगे जैसे तैसे करके मैनेज करोगे अभी सेकंड को मैंने बोला थर्ड वापस आया और मैंने थर्ड की रात को 8 बजे बोलती हूँ ना अभी चौथा चैप्टर और आएगा नाउ देयर विल बी 4 चैप्टर्स इन योर सिलेबस नाउ अगेन यू विल डिस्टर्ब अगेन यू हैव टू प्लान इट आउट पहले आप 4 घंटा पढ़ रहे थे उसके बाद जब मैंने एक चैप्टर और बढ़ाया तो आप 6 घंटा पढ़ने लगे मैं और बढ़ा दूं तो फिर आप कितना 8-8 घंटा पढ़ने लगोगे मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा योर प्लानिंग विल बी डिस्टर्ब तो आपके लिए टाइम सिलेबस ये फैक्टर्स है जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं तो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इक्विलिब्रियम आल्सो इफ वी चेंज दैट फैक्टर्स आवर इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब जैसे मैंने पानी लिया है कंटेनर में और इवेपोरेशन होगा कंडेंसेशन होगा
थोड़े टाइम बाद उस कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। पानी लीधु 25 डिग्री सेल्सियस नो 50 લઈ લ્યો, આટલું વોટર લીધું, ક્લોઝ કન્ટેનર, વેપર બને, या મેનોમીટર લગાડ્યું, ઇક્વિલિબ્રિયમ આવી ગયું, વેપર પ્રેશર 700 mm આવ્યું, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन द कंटेनर। अब सालों साल ऐसे ही रहेगा, अगर मैं कोई कंडीशन चेंज नहीं करूं, आप 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर आप आके देखोगे तो वह मैनोमीटर में आपको 700 mm में मिलेगा। हाँ, अगर आपने कोई चीज चेंज नहीं किया है तो। लेकिन अगर कोई नॉटी आया और उसने इसका पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 80 डिग्री कर दिया, गर्म कर दिया पानी, व्हाट विल हैपन? इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। અહીંયા પ્રેશરની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જશે, मतलब ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું। કોઈ બીજો માણસ આવે, વોટર એડ કરી જાય એની અંદર, વધારાનું પાણીનું લેવલ વધારી ગયું, again what will happen? This value will change, means equilibrium will disturb। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम पे असर करते हैं। There are few factors which affect equilibrium। What are that factors? How they affect equilibrium? अगर उन फैक्टर्स को अपन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा, सिस्टम वापस कैसे नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, that is in this topic which is called Lee-Chatelier's principle। क्या बोलते हैं? Lee-Chatelier's principle, very important। Lee-Chatelier's principles। अमोनिया बनाते थे पहले, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही बनाते थे। हेबर के पहले बनाते थे, हेबर्स प्रोसेस पढ़ते हैं ना अपन, उसके पहले अमोनिया बनाते थे। लेकिन बहुत टाइम लगता था, खूब सारे रिएक्टेंट यूज होते थे और थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलता था। हम कोई भी फैक्ट्री डालते हैं, जैसे अमोनिया बनाने का फैक्ट्री मुझे डालना है, तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कम कॉस्ट में करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कम टाइम में हो, ऐसा चाहेंगे ना। ऐसा थोड़ा सारा दिन फैक्ट्री चली और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे कितना अमोनिया मिला? 2 लीटर। आटली मोटी फैक्ट्री में एंड ऑफ द डे મને 2 જ लीटर अमोनिया મળે તો શું તો હું રાખું ને શું સપ્લાય કરું? એમ થોડા બિઝનેસ હાલે। તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી how to increase the production of the products, that is important according to the Lee-Chatelier's principle। If you know the Lee-Chatelier's principle, you can increase your production। जिस किसी भी फैक्ट्री डालो अमोनिया की नहीं। Suppose you are constructing a factory for preparation of hydrochloric acid, फिर कोई पूछेगा how to increase production of hydrochloric acid, Lee-Chatelier's will help you। So Lee-Chatelier's principle is very important in deciding how to increase or decrease the production of ammonia। Suppose मैं फैक्ट्री बंद करके लिए थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, दिवाળી વેકેશન બહાર ફરવા જવાનું, ન જોતું પ્રોડક્શન અમોનિયાનું, બંધ કરવી ફેક્ટરી, સાવ બંધ ન કરાય। ફેક્ટરીઝ હોય ને સાવ બંધ ન થાય કેમિકલ ફેક્ટરીઝ, કારણ કે પાછી ચાલુ કરવા માટે એને એટલી હીટની જરૂર પડે, એ નુકસાની જાય। How to decrease the production of ammonia? Everything can be known with the help of Lee-Chatelier's principle। What is this Lee-Chatelier's principle? It is very simple। If you change the factors like concentration, temperature, pressure, if you change concentration, temperature or pressure of system which is in equilibrium, ये कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये पेन बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। If I change concentration, temperature or pressure, what will happen? Its equilibrium will disturb। આમ ટેડું થઈ જશે, equilibrium disturb થઈ જશે। Straight છે means equilibrium માં છે, એકય ફેક્ટર ઉપરવાળું મેં ચેન્જ કર્યું એટલે આમ થઈ જાય, એટલે equilibrium disturb। What happen if equilibrium will disturb then? System will try to minimize the change what we are doing and it will achieve new equilibrium state। आप जो भी चेंज कर रहे हो, सपोज आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, कोई रिएक्शन है, A gives B, इक्विलिब्रियम में છે, એમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું,
હવે આપણે શું કર્યું? બી નું પ્રેશર વધારી દીધું, એ નું પ્રેશર વધારી દીધું. What will happen? System will try to decrease the pressure. आपने बढ़ाया, सिस्टम उसको कम करेगा, रिएक्शन उसको कम करने की कोशिश करेगा. सपोज आई विल डिक्रीज द टेम्परेचर. मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद डिक्रीज कर दिया. व्हाट द सिस्टम विल डू? सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर. જે તમે ચેન્જ કરો સિસ્ટમ એને મિનિમાઇઝ કરે, જેટલું એનાથી પોસિબલ થાય એટલું. સપોઝ હું પ્રેશર ઘટાડી દઉં તો સિસ્ટમ વધારશે. સપોઝ હું ટેમ્પરેચર ઘટાડી દઉં તો સિસ્ટમ વધારે. કોન્સન્ટ્રેશન વધારી દઉં તો સિસ્ટમ ઓછું કરશે. તો સિસ્ટમ will try to minimize the change what we are doing and the new equilibrium state is achieved. This is known as Le-Chatelier principle. So what is Le-Chatelier principle, students? When any reaction is in equilibrium under certain condition of concentration, temperature and pressure, if we change any one of the factor, what the system will do? System will try to minimize the change. System will try to decrease the change as far as possible and attain new equilibrium state. This is known as Le-Chatelier's principle. आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे, सिस्टम बी को कम करेगा. आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे, सिस्टम ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा. आप जो करोगे सिस्टम उसका अपोजिट करेगा. आपके चेंज को सिस्टम मिनिमाइज करेगा और नया इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा. दिस principle is known as Le-Chatelier's principle. Now we have to study how the